Now children, today let's start with chapter number 2, state government. So in this chapter I will tell you about the state legislature. Legislature का काम होता है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव इसको एग्जीक्यूट करते हैं और जुडिशरी का काम है न्याय देना, राइट. So what is state legislature? It makes law at the state level and it is unicameral and bicameral. So states have only legislative assembly जिसको हम क्या कहते हैं विधानसभा. It is unicameral state which have both, जहाँ पे legislative assembly और आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों होती है वो बाइकैमरल होती है, राइट. लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे हम विधान परिषद कहते हैं. There are some states like महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, यहाँ पे बाइकैमरल लेजिस्लेटिव है, मतलब यहाँ पे विधान सभा भी है और विधान परिषद. Legislative council, it is the upper house of the state legislature, which is not more than 1/3 of the total member of the legislative assembly of the state and there is not less than 40 members. Legislative council they are not subject to a dissolution of 1/3 either member retire. जो देखो उसको हम डिसॉल्व नहीं कर सकते, बस जो 1/3 मेंबर है वो हर 2 साल में क्या होता है रिटायर्ड होता है. It is partially elected and nominated. 5/6 of the member of legislative council are elected and the remaining 1/6 is nominated. जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स है लेजिस्लेटिव काउंसिल को उनको हम चेयरमैन कहते हैं, हु इज इलेक्टेड बाय द मेंबर एंड इट प्रेसाइड्स ओवर मीटिंग्स एंड मेंटेन्स डिसिप्लिन एंड ऑर्डर इन द हाउस. ठीक है. इन दिस एब्सेंस देखो अगर इन एडिशन टू हिज वोट एज अ मेंबर ही कैन कास्ट हिज वोट. अगर टाई हुआ है तो वो क्या कर सकता है, वोट डाल सकता है. अगर एब्सेंस है डिप्टी चेयरमैन का तो वो हाउस को प्रिसाइड करते हैं. वहीं हम विधानसभा की बात करते हैं, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली. सो विधानसभा और द लेजिस्लेटिव असेंबली इज द लोअर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर. जो मेंबर है उनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली दैट इज एमएलए, दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल फ्रॉम स्टेट कंस्टिट्यूएंसी. The number of member of the legislative assembly varies from state to state, depending upon the population of the state. People who are registered to vote को अपने representative को elect करते हैं from the constituency to represent them in the state assembly. According to constitution, maximum size cannot be more than 500 or minimum is not less than 60. So the term of the Vidhan Sabha is for 5 years. It can be dissolved before the expiring the term of the governor. And the legislative assembly has a speaker, एक इसमें स्पीकर होता है and a deputy speaker. और जो deputy speaker होता है वो हाउस को प्रिसाइड करता है in the absence of speaker. Now what are the qualifications? Citizen होने चाहिए, not less than 25 years, और जो legislative council वाला होना चाहिए वो not less than 30 years. Legislative assembly not less than 25 और council का जो होना चाहिए वो not less than 30 years. He or must not hold any office of profit. And he must not be unsound unmind, ठीक है, और डिस्ट्रॉयड और यानी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में भी नहीं होना. पावर्स एंड फंक्शंस की हम बात करते हैं. सो लेजिस्लेटिव फंक्शंस क्या होते हैं? इट मेक्स लॉज ऑन सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट. फाइनेंशियल पावर, ये जितना भी कंट्रोल है फाइनेंसेस पे वो इसके पास रहता है. विदाउट द अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट वो स्पेंड नहीं कर सकता, ठीक है. देन कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर के लिए, right. They ask question from the minister and they can remove the minister. और कैसे रिमूव कर सकते हैं? बाय पासिंग नॉन कॉन्फिडेंस मोशन. नाउ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी कर सकते हो. इलेक्टोरल फंक्शन क्या होता है? पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. स्टेट एग्जीक्यूटिव, इसमें आपके गवर्नर हेड ऑफ द स्टेट होते हैं और जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो रियल स्टेट होते हैं. वही हम गवर्नर की बात करें, ही इज कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव. जितने भी पावर्स हैं वो एक्सरसाइज गवर्नर के नाम पे होते हैं, बट जो रियल फंक्शनरी होता है, मतलब जो काम करता है वो कौन होता है? चीफ मिनिस्टर. गवर्नमेंट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. ये भी 5 years के लिए होते हैं, राइट. क्वालिफिकेशन की बात करें, सिटीजन होने चाहिए, कंप्लीटेड 35 years ऑफ एज, ठीक है. 35 years के होने चाहिए. ही शुड नॉट होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. ही शुड बी नॉट द मेंबर ऑफ एनी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. ही इज द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेचर. द सीट विल बी कंसिडर्ड वैकेंट फ्रॉम द टाइम ही अज्यूम द ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट. ऑन द बेसिस ऑफ कन्विक्शन, नो अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए. ही शुड नॉट बी द रेजिडेंट ऑफ द स्टेट. जिस स्टेट के वो गवर्नर है उसके वो रेजिडेंट नहीं होने चाहिए. इफ वी टॉक अबाउट पावर एंड फंक्शन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है उसके हाथ में होते हैं, डिसीजन ये ही लेते हैं, राइट. एंड
He appoints the leader of majority party in the assembly as chief minister and councils of ministers or advocate general. No bill can become law without his assent. Right? He issues ordinance, and in the times of law and order failure, president जो होते हैं वो rule can be clamped in the state. Governor may be grant pardon, right? Reduce punishment. Chief minister, after the election to the assembly, the governor appoints the leader of the majority party as chief. No clear majority is there. Chief minister is the real head of the state, right? Next is power and functions. The chief minister presides over cabinet meetings and takes stocks of administration. He communicates the government policy or to the people with the help of press and other media expenses. Though budget is prepared by the finance minister, cabinet determines principle of budget in consultation. Right? He also maintains relation between the state legislature, council of minister and the governor. Now council of ministers की बात करते हैं. इसमें आपके कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर आ जाते हैं. What are the functions of council of minister? Being real executive of the state, ये क्या करते हैं? Policies को frames करते हैं. ठीक है? They run by the council of minister and they are divided into various departments. Each is head by minister. According to the policy passed, councils of ministers होता है वो जितनी भी फाइनेंशियल पॉलिसीज है उनको कंट्रोल करता है, डिसाइड करता है टैक्स स्ट्रक्चर को और वेलफेयर ऑफ द स्टेट. राइट. नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर. ये लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं लाइफ को, प्रॉपर्टी को. ठीक है. डिस्कस डिस्प्यूट्स विद अदर स्टेट्स, अपॉइंटमेंट्स टू ऑल हाई ऑफिसेस. राइट. इफ वी टॉक अबाउट सिविल सर्विसेज, डिसीजन ऑफ द मिनिस्टर्स आर एक्चुअली एग्जीक्यूटेड बाय द मेंबर ऑफ सिविल सर्विस. जैसे आईएएस और आईपीएस होते हैं, इनको अपॉइंट किया जाता है. चीफ सेक्रेटरी जो होता है वो हेड करता है आपके सिविल सर्विसेज को. एंड सेक्रेटरीज ऑफ डिपार्टमेंट लाइक एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, एजुकेशन, जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर. इट इज डिवाइडेड इनटू डिवीजन दैट लुक्स आफ्टर डिविजनल कमिश्नर. दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट व्हिच आर एडमिनिस्टर्ड बाय द डिप्टी कमिश्नर. नाउ जुडिशरी एट द स्टेट लेवल कंसिस्ट ऑफ हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, प्रोविंशियल कोर्ट एंड न्यायिक पंचायत. High Court stands at the head of the judiciary and it is headed by Chief Justice and has many judges as the President of India considered necessary. Right? This is all in this chapter. Hope you understood. Now we will meet in the next class. That's all for today. Thank you.